हेलो किड्स, कैसे हो यार? हाउ आर यू किड्स? ऑल गुड? आई एम गुड। आई एम ग्रेट। हे काव्या। हेलो आदित्य। हेलो ईशानी। हे रक्षित। गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। हे काजल। हेलो भवेश। हे ईशा। हेलो निधि। मोक्षिता। गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम लोग? सो हाउ आर यू? आई एम गुड यार, आई एम रियली गुड। आर यू डन विथ योर लंच? यस, थैंक यू भवेश। मोटिवेशनल बच्चे, मोटिवेटेड बच्चे। तो चलो, लेट्स बिगिन विद रैपिड फायर। व्हाट यू गाइस से यार? रैपिड फायर के लिए रेडी हो? हाउ इज योर डे? आह, हेक्टिक। मजाक कर रहा हूँ। ऑसम। नेवर से योर डे इज हेक्टिक। हे मोक्षिता। चलो, तो बिगिन करते हैं यार, लेट्स बिगिन। यस। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट, राइट? काफी टाइम दे दिया है। लेट्स बिगिन। 3, 2, 1, लेट्स बिगिन। Time's up. Amazing try, yeah. Rakshit, Mokshita, Ishani, Aditya, Isha, Nidhi, Kajal, Kavya, Aryan, and Bhavesh. Wow. Because it was a very direct question. Agree करते हो नहीं करते हो? Multiplication of two number is equal to HCF into LCM. Sir, was it tough? Sir, क्या ये tough था? No, right? चलो, let me start the next one. ये देखो. Which of the following does not end in zero? Does not लिखा है. Three, two, one. Let's hit it. Last 3 seconds के जल्दी से करो. 3, 2, 1, and time's up. क्या कर रहे हो kids यार? What you are doing? Everybody is not solving out. Why?
See, it's very simple. You're ending with 0, right? So you need 1, 2, and 1, 5. Rejected. That's it. This is the answer. Does not end with 0. That's it. क्योंकि इसमें देखो ये 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, बस इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following number has a terminating decimal? Terminating decimal है इसका. You remember 2 raised to m into 5 raised to n. Started. 3, 2, 1. सिली मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा देख लो ना. That's it. I know a lot of you will do this mistake. I was pretty sure about it. और वही हुआ. नहीं करना था ना यार ये मिस्टेक. Last 3 seconds. 3, 2, 1 and time's up. अरे ये गलती नहीं करना था भाई. ये गलती नहीं करना था. You had to not do this mistake. Why sir? अरे बहुत सिंपल है देख. 105 by 60 divided by 3. This will be 45 ish. 35 by 20 divided by 5. This will be 7. This will be 4. So only 2 raised to 2. Wow. That's why it is terminating. How many of you did this silly mistake? कितने लोगों से ये silly mistake हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Bhavesh, to improve your speed. To improve your speed, I end in fast time. यार, it was so easy, यार. Which of the following number is not irrational? It's so simple, root 4, right? Okay, so let's solve few questions. How to prove root 2 as irrational? Kids, do you know this or you need my help? Bhavesh, thanks. बता यार. Do you know this or you need this help? Contradiction. Confusion या contradiction? Confusion. So let's assume that root 2 is irrational. Root 2 is rational. Let's assume that root 2 is irrational. Irrational. हाँ शुभ बताएंगे. Let's assume that root 2 is rational. So let's recall the definition of rational number. What it says. It can be represented in the form of P by Q, where P and Q are what? Where P and Q are what? P and Q are co-prime. Co-prime matlab they will not have a factor other than common factor as 1. Aditya, it's fine. Late ho just start kiya. So that means root 2 is equal to P by Q. So root 2 is equal to P by where P and Q are what? Tell me. Where P and Q are co-prime. Right? So what we will do here, we will square them. Root 2 square is P by Q square. अरे ज्ञान chill है, don't be sorry. तो 2 हो जाएगा P square by Q square. That means Q square is P square by 2. So let's write a very important step. Q square is an integer, then P square must be divisible by 2.
which means P is also divisible by 2. Yes or no? Everybody was saying, right, yes, it's true. So if 2 divides P square, then 2 also divides P. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? So P is some 2m. P is some 2m. P is equal to 2m. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Rakshit, bata. Rakshit, let's hit it, yeah. Next phase, next. Instead of P, just put 2m. So you'll get 2m into 2m by 2. 4m square by 2, which is 2m square. So m square is q square by 2. That means, what we mean? So since m square is an integer, q square is also divisible by 2, which means that q is divisible by. If q square is divisible by 2, it means q is also divisible by. Yes or no? If q square is divisible by 2, then q is also divisible by 2. So that means q is some 2n. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Q is also 2n. Q is 2n. So now if you see the very strange thing, what is that strange thing? Both P and Q are multiples of 2. Can we still call them co-prime? We can't call them no prime. Because see, both are having factors other than 1, that is 2. They are having factors other than 1, that is. Yes. So they have other factor which is 2. That's why they are not co-prime. So that means this is a contradiction. If it is a contradiction, come on, contradiction. So it is not rational. It will become irrational. It will become irrational. No, Ishan, I don't know. Sir, can we say this by fundamental theorem of arithmetic? Chitraksh, not this one, but वो factor वाला बोल सकते हो. So similarly, root 3 we can also prove. Contradiction means suppose I am saying I am having a uh, chocolate, right? Suppose I am not having a chocolate, but I am still saying I am having a chocolate. So with the statement, I am contradicting myself. I am not having, but still I am saying. That is called contradiction. Are you ready for quizzes, yaar? Are you ready for quiz? Answer this fast. It's a very right answer. Contradiction, sir. Contradiction, sir. Contradiction. Contradicts. Contradicts. Prove that root 2 is an irrational. We need to assume that it is what? We need to assume what? 3, 2, 1. Let's hit it. Last 3 seconds. 3, 2, 1, and time's up. बच्चों इसमें तो क्या ही था, they have to be rational. You have to be rational. Rational and rational. Question number 3. In the proof of irrationality of root 2, the contradiction arises because we cannot find dash integers p and q such that they are this.
So this will be a super challenge quiz. Within 5 seconds, I will end the quiz. 3, 2, 1. Let's hit it. Only 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. And time's up. Wow, yeah, wow. Almost 95% of you were able to answer this. Amazing, yeah. We could not prove them they are co-prime. Actually वो लोग तो co-prime है, but हम लोग prove नहीं कर पाए. चलो कोई नहीं यार. Which of the following is not irrational? Are you ready, kids? 3, super challenge. 2, 1. Let's hit it, yeah. 3, 2, 1. And time's up. Wow. So you guys did it in 1 second only, yeah. Wow. So you can clearly see root 4. Root 4 is what? 2. 2 by 1, which is rational. So let's solve few more questions here. What you guys say? Yes, yes, sir. Let's solve few more. Root 2 plus 2. So what you want? You want me to solve or you will try? ये ऑप्शन अपने आप से आ गया. Okay, 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 okay. Start trying. Start trying. I'll tell you, yaar. Let me explain you. You can try, but you can see me the way I'm doing. Okay. So we saw same method. First is contradiction method, assumption. Next method is putting it as P by Q. So what we will do, we'll send 3 on the right side. 3 on the, we'll take LCM. So it will become P minus 3Q upon Q. What type of number is P minus 3Q? Even, odd, integer या fraction? You have to answer fast, yaar. What you guys are doing? Yes. ये integer होगा भाई, because integer minus integer. See, P minus 3Q. P is also integer, Q is also integer. So integer minus integer, क्या बोल रहे हो यार? Integer is होगा. That's amazing, sir. Yes. So that means integer upon integer, R upon Q. Let R be integer. Correct. Next step. Let's see this very properly. What type of number R by Q will be? Will it be odd, irrational, rational? Yahoo. 3, 2, 1. Let's hit it. Obviously यार P by Q क्या होगा? तुम लोग खुद ही बता दो ना. बता. अरे बताओ. Obviously rational होगा. R और Q दोनों इंटीजर है, तो rational होगा.
So guys, is it not contradiction? But root 2 is irrational number. But root 2 is irrational number. Contradiction. Which is a contradiction. Irrational can't be equal to rational, right? Hence, this is not a rational number. Till now, you have any doubt? If you have any doubt, tell me. If you have any doubt, tell me. Because this is बहुत easy वाला part. क्विज करा रहे हैं. श्लोक क्या हो गया? यस सर, क्विज क्वेश्चंस पे सर थोड़ा टाइम दीजिएगा ना सर, मतलब कि जब तक ये क्वेश्चन रीड करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिमाग में घुसता है तब तक ये पोलिंग स्टार्ट होके खत्म हो जाती है. मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अभी स्पीड पे काम कर रहा हूँ अपने बैचेस में. आई वांट यू गाइस टू हैव अ स्पीड आल्सो. समझ गए? बट दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू लिटिल मोर टाइम. Which of the following is not irrational? इतना इजी क्वेश्चन दे दिया. Done. Okay. So 3, 2, 1. Let's start. Aryan and Kajal. Small mistake. लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से कर लो, एक बच्चे ने नहीं खेलता. ओके. यश, आदित्य, ज्ञान, मोक्षित, आशु, ईशानी, कविता, रक्षित, आदित्य एंड श्लोक. वाओ. तो तुम्हें नहीं लगता ये बहुत इजी है? 2 रूट 2 इंटू रूट 2 भाई. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. 2 2 जा. यस और नो? क्वेश्चन में दम ही नहीं. और कुछ नहीं पढ़ाएंगे आदित्य आज. आज के सेशन में बस अब डाउट ही पूछेंगे. यस सर. इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है यार तुम लोग के बैच में? लॉन्ग टर्म में ये सेम 1 घंटे में कभी नहीं होगा. मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं करा नहीं पाता हूँ एक्चुअली, छूट जाता है. सर लड़के फास्ट है सर थोड़ा. और तुम फास्ट नहीं हो? पता नहीं सर, मे बी. तुम भी हो. ये बैच ही फास्ट है एक्चुअली. So kids, you guys are really, I mean, awesome. अलग लेवल पे हो तुम लोग. So what we will do is right now I'll take your doubts. If you have any doubts on this part, feel free to ask me. Feel free to ask me. प्रूफ नहीं करना है आदित्य. आदित्य, नो नीड टू प्रूव. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को प्रूव नहीं करना है. देख वो सिंपल है. ट्रिक यही है, एक ट्राइंगल ले ले और उसमें साइन थीटा, प्रॉपर से साइन थीटा निकाल, कॉस थीटा निकाल, फिर लगा. देन इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू प्रूव. समझ रहा है? जैसे ये 90 माइनस थीटा ले लिया, एक ट्राइंगल लेगा तो यू कैन प्रूव एवरीथिंग.
आर डी शर्मा पे हम लोग एक माइक्रो कोर्स निकालने वाले हैं मोस्टली। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल पे एक माइक्रो कोर्स निकालेंगे। वो देखते हैं, ईशान देखते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है यार, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल कैसे याद करेंगे? 0, 30, 45, जस्ट राइट 0, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। नाउ टेक द स्क्वायर रूट। अरे मोहम्मद ऐसे नहीं करते। So you'll get 0, root 1 by 4 half, 1 by root 2. This is for sine. Clear है शुभ? एनसीईआरटी एनफ तो है यार। Anyways kids, I told you about the book, right? Rakshit, the other part of the table, the cos क्या होगा? Cos उल्टा से start होगा, just opposite of this. So it doesn't matter ना, I can teach. It's not about teaching all. तो बच्चों मैंने तुम्हें जो बुक बताया है वो ऑलमोस्ट 5-6 दिन में कंप्लीट हो गया है, तो इट विल बी वेरी सून अवेलेबल फॉर यू गाइस। For basic NCERT is good or not? Yes, yeah, it's very good, more than good. Rakshit, it is yet. Give me some time. 5 days, में I'll tell you everything. I'll publish in my group. वो देखते हैं ज्ञान यार. Can you please greater than and less than in each case of variable? I'm getting confused. Vedic maths, let's see. Next course का कोई idea नहीं है. Ishani, can you please greater than and less than in case of fraction? Which variable in denominator? Very confused. अरे it's simple. अगर जैसे बोल रहा है कि denominator में if you add 5, then it is greater than half, suppose. I'm not getting your question actually. Until I get the question, I'll not be clear. Coding नहीं यार, coding कहाँ करा सकते हैं? You send me the question. Question भेजो ना. Thank you जिया. तो लीडर बोर्ड, हाँ, मोक्षिता, आदित्य, ईशानी, निधि, रक्षित, शुभ, ईशा, ज्ञान, कज्जल, श्लोक, आदित्य, दिव्या, मोहम्मद, यशराज एंड पायल. So kids, apart from this, if you have still doubts, right? अगर doubt pertain करता है, तो you already have my email. This is not a batch. This is a micro course. Ishani, it depends. It depends. X कैसा है इस पे डिपेंड करता है. Question is incomplete, Ishani. If x is greater than 4, then obviously 1 by x minus 3 is greater, because क्या होता है ना, अगर तुम x 5 डालो तो 1 by 5 minus 3 half, और x 5 डालो तो 1 by 8, which is greater? 1 by x minus 3. कोई बात नहीं ज्ञान, फिर से भेजना, भरोसा रखो. वेरी गुड.
तो kids will meet again in tomorrow's class. कल तो revision ही करेंगे. Tomorrow we will do summary and some good questions. Tomorrow's session will be a good question. And what will I do? I'll make you guys to solve the question. Okay? Tomorrow. What do you guys say? हाँ श्लोक, time left है, so you can entertain us, श्लोक. एक इक्वेशन का गामा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? आदित्य, यू हैव टू यूज, डिपेंड करता है वो मास्टर क्वाड्रेटिक या मास्टर क्यूबिक के हेल्प से करेंगे. लोग डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं यार. सर डाउट तो नहीं है सर, आप क्वेश्चंस दीजिए हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कहाँ से लाए यार, वही प्रॉब्लम है. क्वेश्चन जो कराना होता है ना वो हो चुका है. अच्छा मैं कुछ और क्वेश्चन दे दूं, प्रूफ करते रहो. सर आपके पास कोई बुक होगी तो उसी का ही दे दीजिए. नहीं रिटर्न तो मैं दे ही सकता हूँ यार, बुक का कहाँ जरूरत है. जैसे मान लो √2 + √3, इसको इरेशनल प्रूफ करो. बट मैं क्या चाहता हूँ कि श्लोक खुद से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. जस्ट आफ्टर द सेशन क्या किया करो, आरडी शर्मा उठाया करो इजी पार्ट का, और उसके लेवल 2 और लेवल 3 वाले प्रॉब्लम समझ रहे हो. यस सर. काफी अच्छा रहेगा. रादर देन डूइंग इन द क्लास, ये क्वेश्चन अपने अकेले से बैठ के करो. वैसे √2 + √3 कैसे करोगे? सर कंसीडर कर लेते हैं कि √2 प्लस वेरी गुड, आदित्य ने बहुत सही जवाब दिया. √2 + √3 विच इज p/q. तो होल स्क्वायर कर दो. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? आदित्य अग्रवाल इज ऑल्सो एनफ. या तो डू एटलीस्ट 20 प्रॉब्लम्स. कल मैं सबसे डाउट चाहता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव मी डाउट्स टुमारो? तो सॉल्व एटलीस्ट 12 to 15 प्रॉब्लम्स फ्रॉम level 2 and level 3. RS Agarwal या RD Sharma. Done. Everybody will write done in the chat. Tomorrow we'll discuss. Tomorrow we gonna discuss. Tomorrow we gonna discuss. देना जितना टफ क्वेश्चन हो सके देना. हाँ जी यार, बेसिक वाले को जब बेसिक वाले सिर्फ एनसीईआरटी कर लेता है ना. बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें और प्रैक्टिस करना तो करो. ठीक है गाइस, तो विल मीट अप टुमारो. आई वांट यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड आस्क मी doubts on real numbers 10 to 12 problems. Done. So let's catch up tomorrow again. Okay kids? Thank you kids. I will ask doubts from each of you. Yes. Bye kids. Bye Shubh. Very good Aditya. Thank you kids.